Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your studies of computer science. So let's start the lesson of computer. So in this lesson, first of all, we are going to learn what are function keys and how we can use the function keys. So first of all, I'm going to open the picture of keyboard. Okay, so this is the picture of keyboard. Can anyone tell me what are the keys of function keys? What are basically your function keys? Abdul Moise, can you tell me at which place your function keys are present on your keyboard? Right, this is at these keys are present at your top of your keyboard. Function keys are present at the top of your keyboard. So can we have some another name of for function keys or not? Abu Bakar, can you tell me? Can we have some another name for function keys or not? Right. We have one more name for function keys that is known as your F keys. So function keys को हम F keys भी call कर सकते हैं. Okay, so after that, how many function keys we have on the keyboard? How many function keys we have on the keyboard? So as you can see, the function keys is starting from the first key, that is F1 to F12. So how many function keys we have on the keyboard? Fatma, can you tell me how many function keys we have on the keyboard? Right, we have 12 function keys on the keyboard. So I hope this is clear. What are function keys? Function keys हमारे पास कीबोर्ड में किस जगह पर होती है? So आप अगर जो भी कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ, उसमें आपको टॉप पर जो कीज़ मिलेंगी विद द नेम ऑफ F1, F2, F3 to F12, these are known as your function keys. इन कीज़ को बेसिकली हम क्या बोलेंगे? Function keys. Okay, so these keys are known as your function keys. So now we will see now what is the use of function keys and why we are using function keys. So function keys are basically used as your shortcuts. So if you want to use your computer without your mouse, and if you want to use with the help of keyboard, then you can use multiple function keys instead of using mouse. माउस की बजाय आप वही काम कीबोर्ड की मदद से इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शन कीज. सो फंक्शन कीज बेसिकली एक शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं. कुछ कीबोर्ड में हम फंक्शन कीज को ऑल्ट की, जो कि ALT के नेम से है, और कुछ फंक्शन कीज को हम कंट्रोल के नेम से विद द नेम ऑफ CTRL के नेम से भी हम यूज़ कर सकते हैं. हम फंक्शन कीज़ को इन कीज़ के साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हैं और इनको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं. सो वी हैव मल्टीपल यूजेस ऑफ फंक्शन कीज़ फ्रॉम F1 टू F12. सो हेयर वी विल जस्ट लर्न द वन यूज़ ऑफ ईच फंक्शन कीज़. सो हम यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन कीज़ का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं. ओके, सो फॉर दैट पर्पज़ फंक्शन कीज़ अगर आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं सो उसमें भी आपको फंक्शन कीज़ मिलेंगी. वो हम फंक्शन कीज़ क्यों यूज़ कर सकते हैं, किस काम के लिए? अब्दुल्ला, कैन यू टेल मी हम लैपटॉप में फंक्शन कीज़ को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? राइट, वी कैन यूज़ फंक्शन कीज़ इफ़ वी वांट टू चेंज द स्क्रीन ब्राइटनेस. स्क्रीन की अगर ब्राइटनेस हमने चेंज करनी है सो उसके लिए हम फंक्शन कीज़ को यूज़ कर सकते हैं. देन इफ़ वी वांट टू चेंज द वॉल्यूम, अगर हमने वॉल्यूम चेंज करना है देन वी कैन यूज़ विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीज़. सो इस तरह से नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ दीज फंक्शन कीज़ विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम F1 to F12. How we can use these function keys in the computer system. Okay, so first of all we have this function key of F1. So now what is the use of function key with the name of F1? So
first of all, we have multiple uses of function keys of F1. F1 के multiple uses हैं, but here we are just going to learn only one use of function keys. Okay, so because you are in class 3, so इसमें आपको F1 से F12 तक हर function key का एक एक use पता होना चाहिए. Okay, so Arslan, can you tell me what is the use of function key? F1. Right. Function key of F1. F1 is basically used if you want to get help related to your document whatever you are using. ओके जैसे कि मैंने इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है और मैं उसमें टाइपिंग कर रही हूँ. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ आई डोंट नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड आई वांट टू गेट सम help from this document, so what I will do, I will simply press F1 from my keyboard, so the help option will automatically enabled. Okay, so now what you have to do, as you can see मैंने keyboard से मैंने अपना mouse pointer use नहीं किया. My arrow is on your screen. Simply I just pressed F1 from the keyboard and the help related to Microsoft Word 2007 is appearing on the screen. Okay, so whatever information you will get, you can use them. So if you want to search anything about Microsoft Word, you can search it in the bar of search bar. So F1 key is basically used if you want to get help. Okay, for example, let me open Paint program. So I hope you all are familiar what is the use of Paint program and for what purpose we can use Paint program. So for example, if I want to get a help related to Paint program, so now what I will do, when simply I will press F1 key from the keyboard, so it will automatically give me the help related to the Paint program. सो इन दिस वे मोस्टली हम F1 की को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड हेल्प ले सकें. और इवन अगर आप गेम्स यूज़ करें उसमें भी अगर आपको गेम लाइक प्ले करने का मेथड नहीं प्रॉपर पता, सो वहाँ पर भी आपके पास F1 की होगी और आप उससे भी इजीली हेल्प ले सकते हैं. ओके, सो F1 की इज़ बेसिकली यूज्ड इफ़ यू वांट टू टेक हेल्प. okay, so next we have the key of F2. okay, let me write here, I will write here used to get help. okay, then I have a key of F2. now Adina, what is the use of F2? okay, so it's not compulsory to use all these keys in your file of Microsoft Word. okay, so because I am typing in the file of Microsoft Word, so that's why this file is opened. So now what is the use of F2 key? F2, that is your function key. And now what is the use of F2? Right, F2 key is basically used if you want to rename your file, your folder, your icon. So you can simply press the F2 key and you can change the name of your file. okay, for example, let's do a practice. I will minimize it. okay, for example, here I have a folder with the name of TP, as you can see on the screen. okay, first of all, I'm going to make this folder to visible. okay, here I have a folder with the name of TP. so simply when I will right click on this option, as you can see there will be an option of option with the name of rename. so in this way you can rename your file. so for example, if I will not use the mouse, so simply I will select my folder, I will press from the keyboard. as you can see, I'm not going to click right click and then I will do some help. no, simply what I will do, I will press F2 from my keyboard and as you can see the text or your cursor will be automatically displayed on your screen. मैंने माउस से या अपने आइकन को सिलेक्ट नहीं किया, सिंपली मैंने अपने आइकन को चूज़ किया. जैसे ही मैं कीबोर्ड पर मैंने F2 को प्रेस किया, इट विल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले मी द cursor bar. so in this way I can simply erase this and I can change the title. for example, I will write here computer
I will write here computer. So in this way, F2 key is basically used if you want to rename your file. So here I will write the option of rename. Okay, so now what is the use of F3 function keys? What is the use of F3 function keys? Okay, now who will tell me? So I'm going to ask this question to Mahnoor. Can you tell me? What is the use of function key F3? Okay, so for example, let me press F3 and you will see an immediate result. Okay, so now what will happen with the use of F3? I will minimize this file. So if I want to make a search on my computer, if I want to find a file or a folder, then simply I will press F3 key from my keyboard. So as you can see, a search bar will automatically displayed on your screen. Okay, for example, if I want to type something here, I will write computer. I will search related to all the documents with computer. Simply I will press enter. So as you can see कि मेरे पास मेरे इस लैपटॉप में जितनी भी फाइल्स हैं कंप्यूटर वर्ड से रिलेटेड या जिस जिस फाइल को मैंने कंप्यूटर के नेम से स्टोर किया है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं. सो इन दिस वे वी कैन डू सर्च विद द यूज ऑफ F3. सो आई विल राइट सर्च files in your system. Okay, so after that we have a function key that is F4. Now what is the use of F4? What is the use of function key that is your F4? And mostly most of the students you are using function key of your F4. बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि F4 की को यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में when you are working in your computer lab. Abdullah, what is the use of F4? Right. So here you have to use this function key of F4 with the key of Alt. Okay. So what will happen when I will press in the combination of F4 and Alt key? I will simply, as you can see, I will close my file. I will open Paint program. And when I simply press when I will simply press Alt key and F4, it will give me the option, do you want to save your file or don't save, or if you want to cancel it. So simply F4 with the combination of Alt key is used if you want to close your actively window. वो विंडो जो कि आपकी स्क्रीन पर टॉप पर अपीयर होती है, ये खुली होती है या जो वर्किंग में है, उसको क्लोज करने के लिए आप जैसे ही F4 और Alt को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप उस की को उस फाइल को क्लोज कर सकते हैं. लाइक आई विल प्रेस Alt एंड F4. मैं दोनों कीज़ को कंबाइन में प्रेस करूंगी. सो आप ये देखेंगे वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपने इस फाइल को सेव करना है या नहीं करना है, एंड देन एट देन जो आप अपनी फाइल सेव करेंगे या नहीं करेंगे, एंड देन यू विल क्लोज दिस फाइल. सो F4 and Alt key is basically used close the current program in your window. Okay, so now this is the use of function key that is your F4. Okay, after that what is the use of F5? Okay, Abdullah, tell me what is the use of function key F5? Right, function key F5 is basically used if you want to refresh your page or window. Like if you want to refresh your document, then simply what you have to do, you can press the function key of F5. So for that purpose, I'm going to minimize this file. And then as you can see, when I will right click from my mouse, you will see an option of here with the name of refresh. So you can also refresh your file if you are using mouse. But for example, if I don't want to use a mouse, अगर मैं mouse को इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ with the help of keyboard,
with the help of function keys I can refresh my system. Simply जैसे ही मैं F5 को प्रेस करूँगी, so as you can see कि मेरे जो आइकन्स हैं वो या जो मेरी फाइल्स हैं वो रीलोड हो रही हैं, रिफ्रेश हो रही हैं. So in this way F5 is used to refresh files. Okay, after that we have a key with the name of F6. Now what is the use of F6? Faiza, tell me what is the use of function key F6? Yes, what is the use of function keys F6? Okay, so function key of F6 is basically used if you are अगर आप गूगल पे काम कर रहे हैं या अपना कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं. सो इसमें आप देखें जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करूँगी अपने कीबोर्ड से, मैंने F5 को प्रेस किया, सॉरी F6 को प्रेस किया, तो मेरे पास वो मुझे जो मेरी एड्रेस लोकेशन है या जहाँ पर मैं कोई चीज़ सर्च करूँगी उस जगह पर वो मुझे कर्सर शो कर देगा. ठीक है, सिंपली आई विल चेंज और कॉपी दिस आइकन. मैं इस फाइल को कॉपी कर सकती हूँ, इस लिंक को, या मैं इसको इरेज करके इसमें कोई न्यू ऑप्शन या कोई भी न्यू चीज़ सर्च कर सकती हूँ. सो सिंपली F6 बेसिकली मूव योर कर्सर टू योर एड्रेस बार. F6 या जो फंक्शन की है वो क्या काम करेगी, वो आपका जो कर्सर है उसको एड्रेस बार पे मूव कर देगी. लाइक वी हैव दिस एड्रेस बार. एड्रेस बार क्या होता है कि हम जहाँ पर अपनी कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं अगर आप गूगल यूज़ कर रहे हैं. सो simply when I will press F6, so as we can see मेरा कर्सर यहाँ टॉप पर अपीयर हो रहा है. So cursor basically जिस जगह पर होगा you can type and on that place. So F6 I will write here. F6 is used to move your cursor to the address bar. ठीक है, सो आपका जो कर्सर है उसे वो एड्रेस बार में मूव कर देगा. Okay, that's good. Next we have the function key of F7. So now what is the use of F7? Amar, can you tell me what is the use of function key your F7? Right, F7 key is basically used in Microsoft Word if you want to check your spelling. Okay, spelling या grammar check करने के लिए आप क्या use कर सकते हैं, F7. ओके, सो अब ये देखें मैंने जैसे ही कीबोर्ड से एक यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रिव्यू. यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है सो आप सिंपली उसको करेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो उसमें उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, हम फंक्शन की के थ्रू भी स्पेलिंग चेक को फाइंड कर सकते हैं. सिंपली आई विल प्रेस F7 फ्रॉम माई कीबोर्ड. सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक. सो यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि जब भी आप कोई वर्ड टाइप करते हो या ब्रैकेट इंसर्ट करते हो तो उससे पहले आप स्पेस देते हो. ओके, सो एज यू कैन सी कि अब उसने उस ऑप्शन को फिनिश कर दिया है. सो सिंपली यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ चेंज and if you want to change some spelling then you can use. So F7 is used spelling and grammar check, used for spelling and grammar check. And then we have the function key of F8. Now what is the use of F8? Fatma, can you tell me what is the use of F8? What is the use of F8? So F8 basically की क्या करेगी, फंक्शन की F8 से आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपनी किसी भी फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल when I will press my keyboard. Okay, so now what is the use of function key F8? Right, function key of your F8 is basically used like if you are using your computer and if you want to recover your some file, then mostly we use this function key of F8 in window installation. So I will write here used for window installation.
Okay, then we have a key of F9. So now what is the use of F9? What is the use of F9 function key? Right, F9 key is basically refresh your document. For example, when you will click on this option of refresh, if you want to refresh your document, then simply you have to click on this option of function key F9. आप जैसे ही F9 पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप अपनी फाइल को रिफ्रेश कर सकते हैं. So F9 is used refresh your document. Okay, then we have a function key of F10. So now what is the use of F10? What is the use of F10? So as you can see, when I will press function key F10, keyboard से मैंने F10 press की, so as you can see some commands are highlighted on your document. तो यहाँ पर इसने इन icons को शो करवा दिया कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एज प्रेस करेंगे तो आप होम टैब यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एन प्रेस करेंगे तो आप इंसर्ट टैब यूज़ कर सकते हैं. सिंपली अगर आप एफ प्रेस करेंगे तो आप सिंपली क्या यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपली इन डिफरेंट आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं. सो F10 की इज़ बेसिकली यूज्ड टू गेट अ or to activate your menu bar. Activate your menu bar. For example, if I will click on this option of F10, मैंने फंक्शन की को प्रेस किया F10, सो आप देखें आपके पास मेन्यू बार में जो मेन चीज़ें हैं उसको वो हाईलाइट कर देगा. ओके, so in this way we can use the function key of F10. Then after that we have a function key of F11. So now what is the use of F11? Habibullah, can you tell me what is the use of F11 and why we are using? Right, F11 is basically used if you want to enter or exit in the full screen mode. For example, आप इस वक्त गूगल यूज़ कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि आपकी ये जो कंप्लीट डिटेल है ऊपर वाली ये अपीयर ना हो टॉप बार. सो आप सिंपली कीबोर्ड से जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो ये देखें आपका सिर्फ जो टॉपिक आपने सर्च किया है और उससे रिलेटेड डिटेल एंटर आपकी कंप्यूटर पर शो हो रही है. सो अगर आप इस मोड से एग्जिट करना चाह रहे हैं, प्रेस अगेन द फंक्शन की ऑफ F11. सो इन दिस वे यू कैन turn out from your or exit your full screen mode. So basically function key of F11 is used to enter or exit the full screen mode. Okay, then at the end we have the function key of F12. Okay, so now what is the use of function key F12? Ibrahim, can you tell me what is the use of F12? Right, F12 is basically used if you are using Microsoft Word. अगर आप Microsoft Word यूज़ कर रहे हैं, so you can save your file if you will press F12. और अगर आप कोई और लाइक प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, लाइक एज यू कैन सी मैं यहाँ पर स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सो इससे मैं क्या करूँगी अपनी वीडियो को भी स्टॉप या पॉज कर सकती हूँ. So we can also save our file with F12. So simply I will press Ctrl S, or simply you can, when I will press F12, so it will automatically give me the same dialog box, and then here you can save your file, choose your location, click on this option of save. So in this way we can use the function key of from F1 to F12. Function key is save your file. Okay, so in this way we can use all these function keys. So simply now what you have to do, you just have to do the practice of all these function keys, and at the end you have to write all the uses of different function keys, and then you have to send that file to me in your Google Classroom.
So I hope this lesson is clear to all of you, and if you have any question then you can ask me in Google Classroom or in WhatsApp.